Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I am Shantanu and I welcome you all to the third part of our February Current Affairs MCQs. Friends, इस वीडियो में हम लोग 20th फेब से लेके 28th फेब तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्विक सेशन एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और असाइनमेंट क्वेश्चंस जो एंड में होंगे उनको भी आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा. ऑलराइट, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प. आई ट्राई टू रिजॉल्व इट and also visit novation.in where you can find the PDFs of these lectures and you can also give many quizzes. Further, if the content of Novation has helped you, please go ahead and donate to Novation. That will be a big support for us. Alright, so we'll start today's session. The first question for today: name the campaign recently launched by the Government of India to boost the adoption of electric mobility vehicles and electric cooking appliance. So basically electric vehicles और electric appliance के लिए move करने के लिए कौन सा campaign government ने start किया है? So here the correct answer is C, Go Electric. Let's see the PTN. So, Road Transport and Highway Minister Mr. Nitin Gadkari has said that this Go Electric is the future of India, which will promote cost-effective, environment-friendly and indigenous electric products. This will also ensure electric energy security in the country. So basically, we are trying to move toward environmental-friendly practices in terms of consumption of energy. Next, name the cricketer who became the most expensive player in the history of Indian Premier League (IPL). Friends, here the correct answer is C, Chris Morris. Let's see the points to know. So Rajasthan Royal purchased the all-rounder Chris Morris for 16.25 crore rupees. Okay, and going into the auction, the South African all-rounder had a base price of 75 lakhs. So Chris Morris South Africa से है और उनका बेस प्राइस 75 लाख था जो बढ़ के फाइनली 16.25 crores में उनको परचेज किया गया. एंड युवराज सिंह सेकेंड नंबर पे थे, उनको 16 करोड़ प्राइस था. देन कमिंस वाज ऑन थर्ड पोजीशन. Next, which of the following countries is going to host the 13th BRICS Summit of 2021? Friends, यहाँ पर correct answer है B, India. India is going to host and chair 13th BRICS Summit. Let's see the PTN. So this will be the third time India will be hosting the BRICS Summit, and it hosted last time in 2012 and 2016. एंड ब्रिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो इट इज़ अ इकोनॉमिक ब्लॉक इन विच ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर मेंबर कंट्रीज, एंड साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010. ओके, नेक्स्ट, हु वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 फाइनल रिसेंटली? Friends, here the correct answer is A, Naomi Osaka. So she defeated Jennifer Brady, and Jennifer Brady is from USA and Naomi is from Japan. Okay, so please remember that. And 6-4, 6-3 से उन्होंने हरा दिया. And this is the fourth Grand Slam win for Naomi Osaka. एंड अगर मेंस की बात करें तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के प्लेयर है, उन्होंने डैनियल मेडवेडेव को हरा दिया. एंड मेडवेडेव इज फ्रॉम रशिया. ओके, नेक्स्ट इज name the Indian American scientist who led the guidance, navigation and control operation of the Mars 2020 mission of NASA. Friends, here the correct answer is A, Swati Mohan. So let's see the PTN. You can see Swati Mohan in the photograph. So the world witnessed the historic landing of NASA's Perseverance rover on the Martian surface recently. So recently Perseverance जो rover है वो उसने land किया है मार्स पर. And Miss Mohan also confirmed that the rover had survived a particularly tricky plunge through the Martian atmosphere. So I hope this is clear. We'll move forward. Next is, in a first, which state government recently brought an ordinance to give co-ownership rights to women in the husband's property? Friends, here the correct answer is C, Uttarakhand. So husbands की property में wife को भी co-ownership मिलेगा according to this ordinance. So this ordinance aims to provide economic independence to the women of Uttarakhand. Okay. Next, which of the following countries has officially rejoined the Paris Agreement recently? Friends, this is a very easy no-brainer. Here the correct answer is A, USA. So Joe Biden जब प्रेसिडेंट बने या उससे पहले जब बने तो उन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि they will rejoin the Paris Agreement, and he fulfilled this promise. So USA has officially rejoined the Paris Climate Accord at least 107 days after it had quit the pact, and 30 days after President Joe Biden fulfilled his promise on his first day in office. So Paris Accord क्या है दोस्तों? So every country which is a member of this Paris Accord, they will try to reduce their carbon emissions, their carbon footprint. So अमेरिका ने withdraw कर लिया था when Trump was the president, but now Joe Biden has again joined the agreement.
Next, which state received the award for fastest implementation of PM Kisan Samman Nidhi Yojana recently? Friends, here the correct answer is A, उत्तर प्रदेश. सो अब PM किसान निधि योजना के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, द फार्मर्स दे रिसीव 6,000 रुपीज एनुअली एंड दे रिसीव इट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. 2,000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको 6,000 रुपीज़ एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया. सो यूपी को इसमें नंबर 1 पोजीशन मिली है इन टर्म्स ऑफ फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद इज रीनेम्ड एज. फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा. हियर द करेक्ट आंसर इज सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम. सो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि बहुत कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी. इट वाज रियली कंट्रोवर्शियल बिकॉज सरदार पटेल स्टेडियम था उसका नाम और फिर उसको हटा के नरेंद्र मोदी रखा गया है. तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी थे. सो आप इसके बारे में पूरी बात ज़रूर पढ़िएगा. ओके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1.1 लाख एंड बोस्ट ऑफ 4 ड्रेसिंग रूम्स. और जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है MCG इन ऑस्ट्रेलिया, वो सेकंड नंबर पे आ गया है. नाउ इट कैन अकोमोडेट अराउंड 90,000 पीपल. ओके, next is which state or union territory has launched the mobile app called Carbon Watch to assess the carbon footprint of an individual. Friends, जब भी आप मोबाइल ऐप का क्वेश्चन देखेंगे प्लीज बी अलर्ट बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट. सो ये जो ऐप है दोस्तों, इट विल असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच डाउनलोड्स दिस ऐप. So here the correct answer is D, Chandigarh. Let's see the PTN. So if a person downloads this app, they are required to provide 4 details about their water consumption, energy consumption, waste generation and transportation. So with this information, this app can automatically find out or calculate or assess what is your carbon footprint towards the environment. Okay. सो फ्रेंड्स, नाउ इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट्स. आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज रिसेंटली साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द फर्स्ट एवर अफ्रीकन कंट्री नेम्ड. सो आप मुझे उस अफ्रीकन कंट्री का नाम ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट, नेम द टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है इस लिस्ट में. सो आप प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा और मुझे टॉप 3 स्टेट्स भी बताइएगा. नेम द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस. अब इस बुक के ऑथर कौन है ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शंस. ओके, सो देन आई टेल यू द करेक्ट आंसर्स. So friends, thanks a lot for watching the video. I hope the video was helpful, and if it has helped you, please give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to Novation for more such important videos on current affairs, business awareness, static GK, verbal ability, etc. And friends, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको Novation का कंटेंट अच्छा लगता है so please visit novation.in. यहाँ पर जाके आप Novation को डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं because Novation needs your support. Alright, so friends, with that I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye and please अपना ध्यान रखिए.